Hello traders, welcome back, and this is an exclusive session where we will discuss about the Nifty for the May month. Today is 10th of May और 26 मई को इस सीरीज की एक्सपायरी है एंड वी सॉ कि 16,800 के लेवल्स ब्रेक होने के बाद टुडे ऑन 10th of May Nifty closed around 16,240. So it's almost a 560 points fall in the Nifty. Now at this point, there are many questions which arises in your mind. Question number one is, will Nifty continue to move down from here? क्या निफ्टी यहाँ से और गिरेगी? Second question is this the end of the sell off और क्या हम यहाँ से बाजार में रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? This is the question number 2. The third question here is that वो जो bull uptrend हमारा बाजार में चल रहा था, is that finished? And are we going to make this same pattern of lower low, lower high and will continue to move down? तो ये वो सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आज हम चार्ट पे ढूंढेंगे एंड वी विल लुक एट द कैंडल्स एंड विल फिगर आउट व्हाट गोना हैपन इन द नेक्स्ट 15-20 days of the May series, right? Are you all ready for this? Let's get to the chart and let's see what's happening there. So as you all can see, this is your Nifty chart, and into this video particularly we will only take the Nifty और हम Nifty को analyze करेंगे and then we will keep the same interpretation about the Bank Nifty. Although I will show you, I will pull up the Bank Nifty's chart also towards the end and we'll discuss few important points, right? देखिए, दिस इज योर मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी और निफ्टी में अगेन आई एम रिपीटिंग, एक जो बुल मूव चालू हुआ था फ्रॉम अप्रैल 2020, इट वेंट ऑल द वे अप टिल अक्टूबर 2021. तो इतने महीनों की ये जो बुल रन आई निफ्टी में, उसके बाद वी आर सीइंग दिस करेक्शन. तो फर्स्ट थिंग विच यू ऑल शुड कीप इन योर माइंड इज दैट दिस इज a corrective phase, right? This is not a trend, this is not a downtrend, this is a corrective phase in a bull trend. I'm repeating, ये जो बाजार में मूव आई है, ये कोई करेक्शन, ये कोई डाउन ट्रेंड वाली मूव नहीं है. दिस इज अ करेक्शन मूव, राइट? दिस इज नॉट अ डाउन ट्रेंडिंग मूव, और दिस हैज occurred after a significant bull move in the market. ठीक है, तो ये जितनी भी बुल मूव पहले आई थी, इस बुल मूव के बाद दिस इज ओनली द करेक्शन इन द मार्केट. मेक सेंस all of you? So I hope this first point is clear to all of you. Now the second question, as far as May month is concerned, so now what we are going to do is that we are going to analyze this corrective phase itself. ठीक है, अभी जो हम अपनी शॉर्ट टर्म या 10 days 15 days की ट्रेडिंग के लिए जो हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, लुकिंग एट द चार्ट, दिस इज ओनली एन एनालिसिस ऑफ द करेक्टिव फेज, राइट? और इस करेक्टिव फेज की अगर हम अपर टेरिटरी की बात करें तो 18,604 ऑन द अपसाइड and 15,671 on the downside. These are the boundaries of this entire corrective move, almost 1900 to a 2000 points sideways kind of band. ठीक है, तो अभी एक बात जो आप सभी को बहुत क्लियरली समझनी है, that we have not changed the main trend, this is only the corrective trend, राइट? और दूसरी बात, अगर हम पूरे बाजार में करेक्शन ड्रॉ करें, सो वी हैव करेक्टेड ओनली अबाउट 25% ऑफ द एंटायर मूव. तो जितनी भी बुल मूव आई है उसका लगभग 25% हमने करेक्शन देखी है, विच इज अ वैलिड थिंग, विच विल नॉट डिस्टॉर्ट योर एंटायर trend of the market, right? तो यहाँ पे this is only a corrective phase. Okay, now see here,
So if you see here, the major support to the monthly chart is around this is 15,800 to 15,900. ठीक है, तो अभी हम 16,240 250 के जोन्स में ट्रेड कर रहे हैं टू द मैक्स। मई में अगर ये जो फॉल है एक्सटेंड भी होती है तो भी मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इज फ्रॉम 15,800 टू 15,900। 15,800 से लेके 15,900 की जो जोन है, दिस इज द फाइनल सपोर्ट जोन जहां तक प्राइस आ सकती है। लेट्स गो टू द वीकली चार्ट, राइट? दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ sell off, and this low may get tested and it may not get tested, so let's not comment on this so far. On the weekly basis, if we see, this is a sideways market on the weekly chart, ठीक है? वीकली पे अगर हम देखें तो this is a typical sideways market, and slowly and gradually this sideways should resolve in a trend. This sideways market should get resolved in a trending market, right? On the daily charts, if we see, right now we are trading below our 200 MA. तो जो 200 दिनों का हमारा मूविंग एवरेज है, हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब दो चीजें हैं, एक तो जो हमने बात की कि 15,800 तक 900 के इस जोन में आ सकता है, और वी आर ऑलरेडी फॉलिंग फ्रॉम 18,100, राइट? तो 18,100 से देखे तो अभी तक हमने 16,142 का लो लगाया, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स वी हैव करेक्टेड फ्रॉम द टॉप. So my sense is that somewhere we are reaching towards the final zone. Yes, let me conclude this. Somewhere we are reaching to the final correction zone, final support zone. Now it may be 15,800, 15,900, or it could be even 16,100. ठीक है? तो right now if you are already short in the market, आपने trailing stop losses use करना चाहिए. For all the short term traders, this 16,400 is the line in the sand. अगर बाजार 16,400 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, that would be the day when this entire sideways market will be resolved into this downtrending in daily chart will be resolved in a sideways market. Because अगर हम daily chart पे देखें तो what's the trend? This is a downtrend on the daily, right? This up move, then again it made somewhat the similar tops, right? This is somewhat similar tops in the market, and then after this corrected back to this, and again here this is the top which market has created. तो यहाँ पे जिस दिन भी बाजार 16,400 16,400 के ऊपर क्लोज हो जाएगी, that would be the first day when this entire downtrend in the daily, in the short term, will be turned as a sideways market. Because how it happens, हमेशा पहले ट्रेंडिंग बाजार साइडवेज में रिजॉल्व होती है, और फिर साइडवेज बाजार ट्रेंडिंग बाजार में रिजॉल्व होती है. So trending to sideways and sideways to trending is the cycle in the market, right? And I have already told you the support. If you look at the bank nifty is already at the monthly 20 MA. So bank nifty is already at good support zone. It has tested the previous tops also. ये इसके पहले के टॉप बने हुए हैं. इन टॉप्स को भी आप देखिए यहाँ पे प्राइस ने टेस्ट किया इस जोन को. सो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं इट सीम्स की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है. सो let's see, I think the correction completion is very near to us, and soon we should see nifty and bank nifty completing its correction, right? So let's see this week or the next week, but market has now overextended on the downside, right? So
ऐसे ओवर एक्सटेंडेड मार्केट में हम बाजार में साइडवेज मूव देखेंगे, और आफ्टर फ्यू डेज ऑफ साइडवेज एक्टिविटी वी विल डेफिनेटली एंड श्योरली सी अ रिकवरी in the price, right? And that recovery in the price should take Nifty back towards 16,700 to 16,800 this expiry itself. तो मेरा मानना है कि हम 16,700 16,800 एक बार फिर से जाएंगे। अब देखना यह है कि हम 16,100 करके 16,800 जाते हैं, 15,800 या 900 से 16,800 जाते हैं, या करंट मार्केट प्राइस से हम 16,800 जाते हैं। बट दीज आर द लेवल्स विच शुड अगेन कम इन द मार्केट, right? So guys, I hope the entire analysis is clear to all of you, right? And I hope this analysis will help you in your decision making. If you want to join me live every Thursday, please click on the link below, register for it, and we'll see you live in the next session. Yes, आपको कैसा लगा session? Please comment करें. We'll catch you in the next session. Bye bye, take care, and all the very best to all of you. Thank you.